Hello everyone. Now we are going to solve triangles exercise 7.1 question number 3, in which it's given that AD and BC are equal perpendicular to AB. AD and BC, this side and this side are equal as well as they are perpendicular to AB. AB को perpendicular है, right? Show that CD bisect AB. CD ये जो लंबी लाइन है ये AB को बाइसेक्ट करती है, ये हमको बताना है. बाइसेक्ट करती है मतलब AB को आधा आधा करती है, राइट? वी हैव टू शो दैट CD इज बाइसेक्टिंग AB. CD बाइसेक्ट कर रही है AB को. किसको? AB को. सो इफ इट इज बाइसेक्टिंग AB तो AB आधी आधी होनी चाहिए. सो फॉर दैट इफ यू प्रूव दैट AO इज इक्वल्स टू OB, अगर ये और ये इक्वल बता सकते हैं आप, तो दैट मीन्स CD इज बाइसेक्टिंग AB, राइट? सो उसी के लिए हमको ये बताना पड़ेगा कि OA और OB इक्वल है. ये कैसे बता सकते हैं हम लोग? हाउ वी कैन शो दैट दे आर इक्वल? बाय प्रूविंग दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल congruent, right? So let us see. So we have to consider these two triangles, right? So before that, in the solution, since BC and DA are perpendicular to AB. ये देखो BC and DA are perpendicular to AB, ये 90-90 के फॉर्म करके दे रहा है, राइट? सो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इफ दिस इज परपेंडिकुलर नो, तो दिस टू लाइन्स आर पैरेलल, विच इंप्लाइज BC इज पैरेलल टू AD, correct? And BC is parallel to AD, that means DC will be transversal. DC is transversal. If DC is a transversal, then DC transverse करती है तो this angle and this angle will be equal, right? Angle BCO equals to angle ADC या CDA भी बोल सकते हैं आप, alternate angle, और BCD. Now this BCD can be called as, इसलिए मैंने और लिखा, BCD can be called as BCO and ADC can be called as ADO, right? Equation number 1. Now we can go for the proving the triangle. In triangle ADO and triangle BCO, BC equals to AD given. Second thing, angle B equals to angle A, both are 90 degree. And the last one, angle BCO equals to angle ADO from 1, right? So this is done, which implies triangle ADO is congruent to triangle BCO by which test? Side angle, angle side angle, ASA. By ASA they are equal, right? So if they are equal, which implies, ये हो गया आपका which implies, yes, we have to prove CD bisect, so which implies AO equals to BO, right? By CPCT. So if they are equal, which implies CD bisect AB. CD AB को आधा आधा करती है, right? So this is the solution of question number 3. Thank you.